welcome to my weekly vlog. This is Anjali, if you don't know me. This week was really weird for me, honestly. So it was third day of my period and I decided to go to office, and then I was like, क्या ही हो जाएगा? I need to go to office. मतलब normally first day होता है तो I don't go to office. I usually take off. Everything seemed completely normal until I left home. But जैसे मैं office पहुंचती हूँ so I started having these cramps, like really bad cramps. I think because of the AC and cold. Normally बाहर का weather was not that cold, and AC में जाते maybe it triggered something. It was my third day, so I'm not sure. So the stomach pain became unbearable, and I was just not able to walk. And I was like, let me go to washroom, and I was like, pain ही है, सही हो जाएगा थोड़ी देर में. तो मैं log in करने लगी, and then I started feeling like कि ये सही नहीं होने वाला है. Then I went to my friend and I told her that I need help, and I started crying. I was trying to control, but then I said, no, I cannot. I was crying literally, and I said, मुझे घर जाना है. I need to go home. Can you help? She was asking me to go to medical room, but I said, no, मुझे नहीं, मुझे घर जाना है. I was so weird. She told me that, go to medical room. मैंने बोला, नहीं, मुझे medical room नहीं जाना, मुझे घर जाना है. फिर medical room में वो मुझे ले गई, and I saw the doctor. Doctor was like, what happened? बट इतना ज्यादा पेन हो रहा था तो मेरी इंग्लिश गुम हो गई है. मुझे पेन हो रहा है, मुझे आई डोंट नो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ हो रहा है. शी वाज लाइक नॉर्मली शी वाज जस्ट टॉकिंग इन इंग्लिश एंड आई वाज रिप्लाइंग इन हिंदी. जो मेरी फ्रेंड थी, शी स्टार्टेड टेलिंग हर कि पीरियड क्रैम्प्स हैं, साथ में शायद गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे हैं, उसको वॉमिट आने को हो रहा है. तो उन्होंने एक्सप्लेन किया एंड शी अंडरस्टूड. शी वाज लाइक, मैं तुम्हें पेन किलर दे देती हूँ, ये दे देती हूँ, वो दे देती हूँ. मैंने बोला, जो भी देना है दे दो, बट मुझे वॉमिट नहीं आएगी. इट्स जस्ट द फीलिंग. उसी टाइम मतलब विद इन अ सेकंड जैसे मैंने बोला नहीं आएगी, तो वो आई स्टार्टेड फीलिंग दैट, एंड ऑब्वियसली आई वॉमिटेड like anything. इतना ज्यादा है और मुझे इतना बुरा लगा. मुझे लगा कि उन लोगों को ये देखना पड़ा तो कितना बुरा है. I'm throwing up and I'm saying sorry. Then they gave me some painkillers and some other medicines. But yeah, this was the whole story of my week, and Monday was the worst thing. I'm laughing right now, but it was not at all like that. I think a lot of women would relate to it क्योंकि it's so common. Even the doctor was saying that she also goes through the same. मैंने सोचा है कि आज Saturday Sunday को I'm gonna clean up the house because I did not get time and I need to do grocery shopping and all, and I am also planning to clean my fridge. So I'm gonna go now and grab some lunch. Bye bye. तो मैं यहाँ पे जोइस कैफे में आई हूँ. आई हैव बीन हियर बिफोर on my birthday or friend's birthday, but I wanted to try something nice क्योंकि घर का खाना खा के मैं बोर हो गई थी. तो this pasta is really good. नाचोस भी ऑर्डर करा था. आपको कौन सा नाचोस था? I think nobody's eating at home these days क्योंकि जब मैं लंच के टाइम पे यहाँ पे आई थी इतने सारे लोग आए हैं. इट्स सो क्राउडेड हियर. प्लेस इज ऑल्सो काइंड ऑफ कूल. यहाँ पे वाइब अच्छी है. इट्स नाइस.
So this was it. I had a productive day. I cleaned the fridge and it was pending for so long. अब जब मैं कल फ्रिज खोल के देखूंगी अपना तो मैं खुद ही शॉक हो जाऊंगी because it is so cleaned and it was so messy. पहले अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो you know that it means a lot to me. Thank you for watching. Good night.